लंच के बाद स्ट्रीम में वापस स्वागत है। मेरा नाम है केट बस 90 और हाँ, थोड़ा लेफ़्ट राइट करना है मुझे। मुझे यूआई पूरा रिवर्ट करना पड़ा, प्रॉब्लम हो गया था। मैंने पता नहीं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में ले जा रहा था मैं ओबीएस को। वो जो कैप्चर स्क्रीन है वो क्या बोलते हैं, गलती से पता नहीं पूरे स्क्रीन के बाहर लेफ़्ट में कहीं पे चले गया। तो 20 मिनट तो उसमें ही लग गए पता लगाने में कि ये ठीक कैसे करूँ। मुझे दिख रहा ही नहीं था बेसिकली, पूरा का पूरा सिर्फ ब्लैक ही दिख रहा था यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा था। तो नहीं नहीं ठीक है ना सब कुछ। ओके, अब सब कुछ हो गया है मेरे हिसाब से। बस एक चीज़ करना बाकी है, स्टारफील्ड एडिट करो और गेम टाइटल डाल दो। सेव, एड, कैंसिल। गेम टाइटल भी डाल दिया। अब रिकॉर्ड और शुरू करते हैं। ओके, अब 3 अलग अलग जगह जा सकता हूँ, पर सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा। वेल, यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पे कुछ ऊपर होगा, तो कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे Yes. नहीं। Okay. मैं दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ। ये खोल सकता हूँ क्या? नो। ओके ओके। I think you need to get rid of some of that gear. हाँ, एक्सपर्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। एक्सपर्ट मेरे पास अभी भी 30 से ज़्यादा है डिजिपिक्स, भर भर के है मेरे पास। तो चलो ये एक्सपर्ट अनलॉक करते हैं। नहीं यार, ये ही इस्तेमाल करना होंगे ये पहले वाले के लिए। ये उतना दूर नहीं है इसके लिए। ये हो गया। फिर 1 2 3 4। ये और ये यस, परफेक्ट। सबसे अंदर वाला हो गया और सबसे बाहर वाला हो गया, बीच का बचा अब बस। एक दो तीन। क्या है? यस, वेल ये काफी आसानी से हो गया। तो शुरू करते हैं इसे अनलॉक करना। नहीं ये था ना। हाँ, ये और ये। ओ ये भी उठा लो। ओके, ये भी एक लॉक ही था। ठीक है चलो, इस एडवांस को भी अनलॉक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। पर ये है, नहीं है। एक दो तीन चार। चलो ये तो हो गया आसानी से कम से कम। पर अभी बाहर का है, अभी भी बचा।
ओ नाइस, हो गया। चलो सारे इसके भी हो गए, अनलॉक करते हैं। नासा मेंटेनेंस की, नासा लैब यूनिफॉर्म से कुछ मिलेगा? ऑलरेडी है मेरे पास, जरूरत नहीं है एक और। ये कहाँ ले जाता है? एक फ्लोर ऊपर ना, नासा मेंटेनेंस। तो इससे पहले एक लाल कोई दरवाजा था इधर। ओके यहाँ पे इतनी आवाज क्यों हो रही है? काफी आवाज होती है सही में यहाँ पे। क्या क्या है यार मेरा अभी करंटली? सूट प्रोटेक्शन, ओके। मीले अटैक स्टिल लेस डैमेज। मैं मीले अटैक्स वैसे भी करता नहीं हूँ, और फिर भी बर्न। कोई है जो सिर्फ और सिर्फ बर्न को ट्रीट करता हो? डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत है क्या? 20% लेस ना, डेफिनेटली चाहिए। ये रहा ना। क्या है? जाना उधर है। ये मेरे हिसाब से एक दूसरा एंट्री जो हमें दिखाता। यप। तो फिर यहाँ पे क्या है? ये बंद था ना शायद? नहीं, पर यहाँ जो भी है यहाँ पे भी आ चुका हूँ। एक और नीचे। ले लो 3000 के ऊपर। Bothering to carry all that junk. ओ, ये रास्ता मैंने नहीं देखा था, मैंने सिर्फ ये तो देखे। अब एक और जगह है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। यही है, ठीक यहाँ पे ही आ गया मैं तो। नासा मेंटेनेंस की। ये बस पढ़ने का है मेरे हिसाब से यहाँ पे कंप्यूटर में। Whenever running power through prototype, secure all loose objects and have researchers empty pockets and remove jewelry watches. I never actually
actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now, Project Demeter, you want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? ये बंदा स्टारबॉर्न है, विक्टर आइजा. To Judith Tatian, Victor Isa, Lan Haslu, as requested, the astrophysics research team has done a full analysis of the data you provided us. The measurements of the Earth's magnetosphere show clear signs of fluctuations, often in correlation to the periods of frequent and large gravity wave spikes emanating from the moon. These gravity waves seem to be affecting the magnetic shield provided by the Earth's inner core, and may be affecting the core itself. Given the proximity to the source. Given. The data indicates the change rate is increasingly exponential as the magnetosphere falters. Its ability to protect us from the sun's solar wind falters. Beyond the devastating effects of solar radiation, this will lead to something more dire, the sputtering or stripping away of our atmosphere. This has happened before to Mars, a planet studied since the earliest days of space, to see the Earth's possible future. We are afraid this future may be closer than we thought imaginable. Some may view this data as normal. There have been historical fluctuations and polarity changes to Earth's core, but this is orders of magnitude greater. We see echoes of previous generations' debates over global warming, and we want the science here to be clear. Like waves in the ocean, these gravity waves rise and eventually crash into shore, the Earth, with devastating consequences. I know what I'm seeing, Victor. The data coming back from the satellites is very clear. It's the grav drives. All those jumps from the moon. At this rate, Earth's atmosphere is going to start sputtering out into space. Can the drives be fixed? I'm working on some designs that should discreetly solve the problem, under the guise of an emergency update to the fueling pumps. We're talking about the end of Earth, and you're trying to be subtle about it. Judith, the last thing we need is people losing faith in grav drive technology. That might be our only option. To what? Are you seriously saying we should abandon Earth? The timeline is under 50 years. A blink of an eye for a planet, but more than enough time for a human exodus. And what do we tell people? We say it's an act of God, one that science has found a solution for. Time for humanity to take its place in the stars. You knew, didn't you? You lied to me. All this time, I dedicated my life to this discovery, Victor. And you knew we were going to kill off our planet? You haven't seen the future I've seen. There's an infinite expanse of promise out there. A meteor could have hit Earth. A plague, another world war. Colonizing other galaxies secures humanity's future for all coming generations, across all time. At the expense of our home. Stop it, both of you. All that matters is building enough ships to get everyone off this planet. And we need to start now. I'll draft up a statement. We'll need to address the entire international community. I'm sorry, Judith. There isn't a planet in this universe that will be far enough away from you, Victor. We are never speaking again after this is over. My name is Dr. Victor Isa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except one other person. Even she didn't believe me at first. But I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I
touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive, this artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. हाँ, this artifact, ये जो artifact हमें तब से ढूंढ रहे इतने ज़्यादा, उससे ये बना है. God, the grav drives destroyed Earth, and at the core of the first drive, an artifact. Okay. मेरे पास भी था. ओह शिट यार, गलती करी. मैंने बहुत बड़ी गलती करी. अबे यार, वो पकड़ ले ना सीधे. क्या कर रहा हूँ मैं सही में? फाइनली उधर जा सकता हूँ क्या मैं? उतना भी दूर नहीं था. यहाँ पे क्या है? एक्सपर्ट अनलॉक. चलो शुरू करते हैं इसके साथ. ये और ये ठीक है. बाहर का हो गया. ये और ये 3. ये ठीक है. अब सिर्फ और सिर्फ अंदर का बचा है ना. ये और क्या सिर्फ 2 ही हैं. मतलब मैंने कुछ गलती करी है. एक के लिए ये और ये एकदम सही है. सेकंड वाले के लिए मुझे कुछ और ढूंढना होगा. हो गया. ये और ये. चलो उतना भी मुश्किल नहीं था, तो शुरू करते हैं. ये सिंपल था. 364 लेजेंडरी शॉटगन. हाँ देखते हैं. इसकी तो जरूरत नहीं है, पर टॉक विद सारा मॉर्गन. इसका फाइनली कंपेनियन क्वेस्ट शुरू हो रहा है. तो ये इस वाले एरिया का पूरा ख़त्म करने के बाद उसके लिए जाते हैं. चलो एक और अनलॉक करते हैं पहले, ये मिशन ख़त्म करने से पहले. तो शुरू करते हैं. Damn it.
ये एकदम सही है, पर ये फिर इसको करूँगा तो फिर फिट नहीं होगा बाकी सारे। ये एक हो गया, फिर ये यस अंदर का हो गया। ये चलो, ये भी ज़्यादा समय नहीं लगा, शुरू करते हैं। ये और ये और ये। अभी बात नहीं करूँगा मैं इससे, और ये क्वेस्ट खत्म, ये मिशन ख़त्म होते ही उससे उसका कंपेनियन क्वेस्ट शुरू करूँगा मैं। ओके, यहाँ से निकलने का मैं सही रास्ते पे था। ओके, यहाँ से निकलने का, यहाँ से कोई रास्ता है? यहाँ एक ही रास्ता है, यहाँ से जाना होगा। यहाँ से चलो, और ये मिल गया। Constellation, we've arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. ओके, कंपनी के लिए तैयार रहते हैं। कंपनी मतलब लड़ाई, ऑफ कोर्स, और क्या। ये सारा मॉर्गन का निकालो, मैं ये बाबा नहीं चाहता इसका। ओ 3 कौन सा लगाऊं? ये लगाता हूँ। वहाँ पे कहीं उतना ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा। ये उतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा है, उतना उम्मीद थी, पर ये करेगा मोमेंटम और ही अच्छा डैमेज, उसका मुझे यकीन है। एक मिनट रुकना यार, इसको मैंने छोड़ दिया क्या पीछे ही? ये डेटा बताता भी नहीं है ये ऊपर है कि नीचे। यप, इधर है वो रहा। हो रहा वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है बेचारा। उनको उनसे कुछ लूट भी नहीं सकते, तो बेकार में रुकना क्यों? यहाँ पे चलते हैं।
ये इस बार ट्राई करता हूँ। 505 ओ 5000, ये डेफिनेटली ट्राई करूँगा। ये है ना सही। और मुझे ये थ्रोबल्स में ये माइन को निकालना होगा यार। फ्रैग ग्रेनेड के साथ शुरू करते हैं। ये भी हो गया तो ग्रेनेड ही अभी इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये लोग ओह शिट। करो मर जा। बहुत अच्छे, नहीं लगी इससे। कहाँ जाना है मुझे? पावर रिक्वायर्ड ना। यहाँ पे पहले नहीं आया हूँ क्या मैं? सेल रिक्वायर्ड। इस बार मुझे सेल ढूंढना है। ये रहा। सही में ये लग रहा है यहाँ पे पहले नहीं आया हूँ मैं। अब डेफिनेटली नहीं आया हूँ पहले यहाँ पे। ये छोड़ता नहीं, वरना मैं ऑर्डर हूँ, सब कुछ अपने साथ ले जाता हूँ। अनलेस मुझसे मिस हो गया हो वो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि मुझसे मिस हो गया होगा। ये कुछ खास नहीं है, उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करना होगा। चलो ऊपर बढ़ते हैं। हेलमेट जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ये डेफिनेटली चाहिए, क्राफ्टिंग का है वो। यहाँ पे पहले आ चुका हूँ और यहाँ से गया था, तो वो कैसे मिस हुआ मुझसे? ये मिस नहीं हुआ, मुझे लगता है मैंने उठाया था, पर क्योंकि सेव करके पूरा बंद करके फिर से रिलोड किया तो कभी कभी हो जाता है कि फिर से आ जाते हैं सारे आइटम्स। मुझे लगता है यहाँ पे भी वही हुआ है। या फिर यहाँ से गया था क्या मैं पिछली बार? हाँ, यहाँ से ही गया था क्योंकि वो नहीं, यहाँ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऊपर से तो नहीं गया था क्योंकि वो दरवाजा बंद था उधर का।
चलो इंडिया ने काफ़ी अच्छा कर दिया 171 for 6 पाकिस्तान। मुझे तो लग रहा था 300 के ऊपर जाएंगे ये, क्योंकि 2 ही विकेट गिरे हुए थे जब मैंने पिछली बार देखा था। और अभी एक और विकेट गिरा। किस्मत अच्छी हुई तो अभी पाकिस्तान को ये क्या बोलते हैं 200 भी नहीं बना पाएंगे, बनाने देंगे और खुद आसानी से मार देंगे। पर अभी के लिए देखते हैं 171 for 7 है स्कोर। कहाँ जा रहा हूँ मैं? किधर जाना है मुझे? पहली बात किधर जाना है ना? Oh shit, यहाँ पे कैसे जाऊं? एक मिनट रुकना। उधर से यार, अब उसके लिए पता नहीं कहाँ पे जाना होगा मुझे। यहाँ से फिर से दिख रहा है कुछ। यार छोड़ो, निकलते हैं यहाँ से सीधा। छूट गया तो छूट गया, क्या कर सकता हूँ मैं। फिर कभी खेला तो यहाँ पे देखूंगा कि ये लेने की। फिर अभी के लिए सीधे चलते हैं। ओ If you're overloaded, we should stop and prioritize. I have something I need to discuss with you. हाँ, बाद में बात करेंगे पूरा अच्छे से। तेरा साइड क्वेस्ट करेंगे ये ख़त्म करने के बाद। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेन क्वेस्ट बचे रहेंगे। सारे मेन क्वेस्ट करो, ख़त्म कर, और फिर ये गेम ख़त्म अभी के लिए मेरे लिए, एली स्ट्रीमिंग में। एक मिनट। नोविस लॉक है ये। दो मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए सही बोलूं तो। एक मिनट भी नहीं लगा जैसे मैंने कहा। ये क्या है रास्ता? ओ कोई है यहाँ पे। Just another test to overcome. अलविदा। ओके, ये डेफिनेटली नई जगह है। आसानी से मैं इन सबको मार सकता हूँ सही बोलूँ तो, सीधे ये लगा के। ये बहुत डैमेज करती है सबको। ये वाली गन बहुत अच्छा डैमेज करती है। और मैं दूसरे गन इस्तेमाल करना चाहता हूँ यार। जैसे अभी ये लिया, इस्तेमाल किया। थोड़ा ये ट्राई करता हूँ। ये ज़्यादा डैमेज नहीं करता है सही बोलूँ तो। इससे ट्राई करता हूँ। वो यहाँ से उसके अंदर से मार सकता है क्या? यस।
नॉट 6, मेरे पास ज़्यादा अच्छा वाला उसका, सही बोलूँ तो 30,000, बाप रे बाप। ओके यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैं बस समय बर्बाद कर रहा हूँ, सीधे चलते हैं। ओ ओ बंदी का फ्लैश लाइट है सारा का। मुझे लगा एक और वो आ गया, क्या बोलते हैं, स्टारबॉर्न। तो स्टारबॉर्न मेरे हिसाब से 1-2 और आने वाले होंगे यहाँ पे कहीं पे। ओ यहाँ पे आया हूँ मैं पहले। ओके या यहाँ पे कुछ नहीं है, यही बस देखना चाहता था। अब सीधे चलते हैं। बस इतने कम सही पे स्टारबॉर्न देगा ये गेम। तो 4 स्टारबॉर्न से को मारा है मैंने। इसे कैसे खोलूं? ये रहा ना। Talk to the emissary. अब बात करते हैं, और इससे जैसे बात करते रहूंगा ये मेरा ये भी फुल हो जाएगा। Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel at the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems? We lost our home. I mean, ये बिना अगर अर्थ को डिस्ट्रॉय करा अगर कर लेते तो वो बेस्ट केस सिनेरियो, बिना अर्थ को डिस्ट्रॉय करे। हाँ, ह्यूमैनिटीज डेस्टिनी वाज द स्टार्स एनीवे, पर Assuming we weren't going to lose it anyway. War, disease, famine, all the classics. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth? What gave Victor Isa the right to choose for them? You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That's why we watch over them. The only thing you are watching out for is yourself.
The emissary is right. Join me, old friend. We can collect the final pieces together. Oh, no, you don't. You're not his old friend, remember? You're from another universe. Don't try to manipulate him. Okay. I couldn't win you over on philosophy. How about pragmatism? I'm more powerful than the emissary. Than any other starborn. And you might not understand why, but I want you to succeed. You've never gotten this far before. I need to see what happens to you. Ooh, I'll get to the Unity on my own. Well, look at that. The emissary just became my new best friend. You've made your choice. When you are ready, the hunter and I will be at the buried temple. That is where we will settle things. Meaning, we'll kill you. But hey, at least we'll wait till you get there. Everyone deserves a shot at the final artifact. Okay, तो ये भी खत्म होने वाला है. मस्त 3 ना. फाइनल आर्टिफैक्ट उधर है, ठीक है. वो कर लूँगा मैं. पर हमें क्या ये बहुत समय से दिख रहा है. एक्चुअली एक मिनट रुकना. Resources. Ah shit. उतना पास नहीं हूँ जितना सोच रहा था. और मैं क्या यहाँ पर हूँ तो मैं इसके पास जा रहा हूँ. वो इस मिशन के स्टार्ट में ये बंदा लैंड किया था यहाँ पे. और अब समय आ गया उसे मारने का. वो मेरे पीछे नहीं आया तो मैं इसके पीछे जाऊँगा. जल्दी चलो यार. कहाँ पर है ये बंदा? ऐसा ना हो कि वो उन चारों में से एक था जिनको हमने मार दिया. इतना दूर आने का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो सही में वैसा हुआ तो. ऑफ कोर्स नहीं है वो. अर्थ की ग्रेविटी को क्या हो गया? ये रॉक्स भी उड़ रहे हैं अब. सही में बहुत चेंज हो गई है अर्थ की ग्रेविटी. दरवाजा खुला है क्या यहाँ पे कोई? ऑफ कोर्स नॉट. कुछ भी नहीं है, कोई स्टारबॉर्न नहीं है यहाँ पे. अब आप कितना दूर है ये? 1100 मीटर दूर. बहुत अच्छे. में क्या? 8. ये एक लो. और फिर चलते हैं.
फिर से ये स्टिकी कीज का हुआ। चलो चलो चलते रहो। कितना और दूर है? 250 किलोमीटर्स किया है बस मैंने। 250 मीटर्स सॉरी। स्कैन हो गया। ये भी स्कैन करो। थ्री आउट ऑफ 5 ना। Oh. Oh shit. गलत बटन दबा रहा था मैं। नेचुरल। इतने दूर क्यों रखते हैं ये? सही में पास में नहीं रख सकते ना सके। पूरा भागना पड़ रहा है। रैंप हैज गॉन ऑफ। तो एक और रैंप लो। 2 मिनट सिर्फ और सिर्फ वॉक और कुछ नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ इसके लिए व्हीकल चाहिए इस गेम में। हेल्थ इतनी कम है मेरी। पहुंच गया हूँ लगभग। और हो गया। कॉकपिट। Crew accounted for. We're ready to depart. और अब जाके इससे बात करते हैं। We should have a talk when you have the time, of course. Yes, I have the time right now. Please, companion Can I questo. help? Ever since we talked about the Battle of Cassiopeia, I can't get what happened out of my mind. Was it that obvious? I thought I could handle these memories, but until I return to Cassiopeia, I'll never be able to put this to rest. I would like that. Actually, I need that. One problem, though. Pinpointing the crew's shuttle wreckage is going to be like trying to find a grain of salt in a sandbox. I think we need to start by locating my old campsite on Cassiopeia 1. Shortly after I evacuated, I saw the ship come apart. The UC listed it as lost, so I assume the Dauntless was completely destroyed. The Dauntless took heavy fire to the docking section during the battle. We had 3 shuttles. One was destroyed, and the other 2 were damaged. There was no other way off the ship. Lucky! Compared to my crew, I hit the goddamn jackpot. Still, I'll never forget my finger hovering over that launch button. Would I launch safely, or explode into a fireball? It turned out that my shuttle had just enough power to allow an emergency landing on the planet's surface.
I wouldn't call what I did a soft landing, but thank you all the same. My shuttle should have the telemetry tracking data for the other shuttle aboard. It should give us an idea where it went down. That's if scavengers haven't completely stripped my ship for parts. It has a breathable atmosphere, indigenous fauna, and maybe a few abandoned mining outposts. Otherwise, it's not populated. Hold on. I don't know the exact location of my survival campsite. For that, we are going to have to head to Mast and see if we can get the information from my old friend, Admiral Logan. Your instincts are right on target. Logan and I butted heads more than once during my time with the Navigator Corps. We've never seen eye to eye. Look, I hope this isn't asking too much. Last thing I want to do is drag you into some kind of personal crusade. That's why I need you by my side. Truth is, I'm scared. When I set foot on Cassiopeia, I don't know if I'll be able to handle what I find. If I begin to fall apart, I need someone I can trust to keep me in check. Besides bad memories, I don't know. I'm trying not to think about it. Not yet. I know you will. You've always been there when I've needed your help. Why you continue to support me, I'll never understand. ये फ्लर्ट ऑप्शन मैं इसलिए कर रहा हूँ हर बार क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं अगर डिसाइड करूँ, पर अभी के लिए मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं जाने वाला इस रन में. I don't know what to say. I've been so busy searching the stars for answers. I've overlooked what's been in front of me all this time. True love. Something I've seriously considered sharing with you for a long time. Just not ready. Not yet. Traveling out here with you, I've discovered that friendships change by circumstance. I worked closely with Aja on long space voyages, so we became friendly. When she quit Constellation, the friendship ended. But I'm certain at this point, even if you and I were separated by a great distance, we'd never lose touch. You're right. I have. Hey, anyway, I've taken up enough of your time. I know you have a lot to do. I really appreciate your offer to visit Cassiopeia. Hopefully, it'll bring me the closure that I've needed for far too long. Okay. नहीं, ये वाला नहीं. In memoriam? Oh yes, ये वाला करना है. Where I will confront the hunter, the emissary, and the allies for the final artifact. और ये भी है. ये भी करता हूँ. पर अभी के लिए पहले ये साइड इनका करना है. फाइनल मेंबर का क्वेस्ट. एक मिनट, कहाँ जाना मुझे अभी? न्यू एटलांटिस ना. हाँ, सेव करो पहली बात तो. और फिर न्यू एटलांटिस की तरफ चलते हैं. अल्फा सेंटोरी, सबसे पास वाला स्टार हमारा. कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं, इसलिए सीधे लैंड कर सकता हूं मैं. Mind if we stop by the waterfall on this trip?
I could use a few moments to unwind. राफेल अग्वेरो. Kind of breaking my concentration here. ओके हाँ उससे भी कर सकते हैं ना. क्या बोलते हैं? उससे क्या कर सकते हैं? एक्वायर? नहीं एक्वायर सही शब्द नहीं है. कुछ पैसा नहीं इसके बाद. हम उससे हील कर सकते बात तो. रिक्रूट वो दिमाग में नहीं आ रहा था वो शब्द. Scanned as you enter the city. Please keep moving. Okay, no bounty. एक मिनट रुकना. यहाँ पर ये इसे रिक्रूट कर देते हैं. The viewport. It's good to see you again. I was wondering if you were going to stop by. Thanks again for getting me back to New Atlantis. The viewport still makes their drinks just the way I remember. ये बड़े दादी के साथ ज़्यादा अच्छा दिखता था. I barely recognize myself either after a shower and a haircut, but the change has made me feel more like the man I was last time I was in New Atlantis. I'm still a little shaky, but I'm doing much better than the last time we met. And my engineering skills are no worse for wear. Have you given any more thought to taking me on as an engineer for your crew? Sure. I have plenty. My engineering course has covered starship systems. You might find a use for me at one of your outposts, too. I maintained a lot of the facilities at Nishina on my own, since I was the most experienced engineer there. Just don't leave me alone anywhere too remote, all right? I don't know if that'd be good for me. I think so. I wanna be. I've felt so useless since I left Nishina, and I can't stand the thought of feeling like this forever. I think my only choice is to start over somewhere new, with a captain like yourself for company. Hello, welcome aboard. Are you serious? You'll really give me a chance? I wasn't expecting that. Thank you. I don't know what to say. Yeah, why not? Maximum? You have my word that you won't regret this. I'll do my best to live up to your expectations, Captain. Really. चलो इसका कर दिया और अब वापस ये वाला एडमिरल लोगन. थोड़ी चीजें बेचने भी है सही बोलूं तो. मैं उम्मीद कर रहा था ये क्या बोलते हैं उसके लॉज के पास मुझे डालेगा. सारी हमेशा लंबा वाला रास्ता क्यों देता है ये. If you don't mind, I'd like to speak to Admiral Logan sooner rather than later. ठीक है. कहाँ पे जाना है उसके लिए? एक ऊपर जाना है ना. ठीक है. I'm not very comfortable heading into Nast. But don't worry. I'll try and keep my complaints to a minimum. Central come. ये नहीं बता सकता था ये. मैं नीचे से डायरेक्टली उधर चले जाता. Pascual Logan, Fleet Admiral, United Colonies Navy. चलो.
Sarah Morgan. It's been what, almost 10 years? Admiral, it's good to see you again, sir. You're not required to address me as sir. That protocol ended the moment you dropped your clusters on my desk, remember? Look, Admiral, I'm not here to open old wounds. Old wounds is an interesting turn of phrase, given our past. Listen to me, Commander. I'm not sure why you're here, but whatever it is, why don't you just get to it? I'm here because I need your help, Admiral. You need my help. That's interesting. The last time we spoke, you made it quite clear that you were turning your back on the Navy. That was a decade ago. Things change. People change. Admiral, please. I didn't come here to argue. I'm here to come to terms with my past. Your past is sitting in a closed file in the archives. That's where you left it when you walked out on the United Colonies. And what about you? Just who in the blazes are you anyway? ये बहुत कॉन्फ्रेंटेशनल है बंदा. I haven't spoken to Sarah Morgan for almost 10 years, and out of the blue, both of you barge into my office. I want answers. You can start with telling me who the hell you are. I see. Then, as Sarah's associate, perhaps you could kindly explain to me why I shouldn't have the both of you escorted from the building. With all due respect, Admiral, this is ridiculous. If you have a problem with me, then there's no need to berate my colleague. I don't have a problem with you, Commander. I'm simply trying to determine why you deserve the Navy's help. That's quite a noble gesture. Is this true, Commander? It's about Cassiopeia, Admiral. I'm heading back there to find out what happened to the crew of the Dauntless, and hopefully, to bring their legacy home. That sounds like a dangerous operation. Are you certain it's worth the risk? I don't know. I see. The fact that you'd risk your own lives to solve this mystery speaks volumes. They were my responsibility, Admiral. One way or another, I intend to bring them home. I understand. And I believe I owe you an apology, Commander. Our last encounter has obviously distorted my impression of your character. What can I do to help? If you wouldn't mind allowing me to access the files regarding my rescue, I'd be most grateful, Admiral. That shouldn't be too difficult. 191 all out. I've sent all the relevant information to you, Slades. Was there anything else? No, Admiral. Thank you. You don't need to thank me, Commander. I just hope you find whatever it is you're looking यादव for. ने एक लिया होगा. मुझे तो लग रहा था 200 के ऊपर बना देंगे आसानी से. 171 for 4 उतना बुरा नहीं है. Proceed to Cassiopeia 1. Okay. Nat Station. और इसके साथ उधर चलो. थोड़े लॉज में करने की सोच रहा था पर छोड़ दो अभी. बाद में कभी लॉज में आऊँगा. वो वैसे भी मुझे उससे बात करना है. बंदे का नाम क्या है? व्लादिमीर से बात करना है मुझे थोड़ा. तो उसके लिए लॉज में जाऊँगा बाद में. और वहाँ पे जाके थोड़े कॉन्फिडेंस वो सब भी बना दूँगा अपने स्किल के लिए. 4 स्किल पॉइंट्स है मेरे पास अभी. इसको ये सही है. वेपन मॉड्स और इक्विपमेंट मॉड्स ना. ठीक है. इसका 18 और बनाने हैं. इसके 15 बनाने हैं. मेन इसके लिए ही चाहिए. इसका एक और लेवल बढ़ाना है मुझे किस तरह.
चलो अभी के लिए ये कैसोपिया का ये जो है वो सब करते हैं। मान में क्या वेपन, थोड़े वेपन डाल दो यार। 111 111 382 150 इसको डाल दो। ये सोच रहा हूँ 358 ना 382 6 मैगजीन बुरा नहीं है इसको। इक्विप करने के लिए है। फायर रेट ज़्यादा है, मैं कम पे डैमेज कम है पर मास उसका बहुत ही ज़्यादा है 9.2। एक्यूरेसी ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है, तो मान में क्या चलता है। इसको भी डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। अभी भी नहीं, बहुत अच्छे। इतना सब कुछ करने के बाद भी E22 रेयर हैवी 40.0x से मिलना जो भी था। 12G शेल रोप कंट्रोल यूनिट। अभी भी 267 कहाँ पे है? इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे जा रहा है। एक्चुअली शायद मुझे मालूम है वो इतने ज़्यादा मेरे पास बियर वो सब है, बियर वाइन उसके उस पे ही जा रहा है ज़्यादातर वेट। Recycled air. Just isn't the same as the real thing. 11 मैं गलत सोच रहा था। ऑटोमेटिक डेफिनेटली चाहिए। इग्नाइट नियरबाई अटैकर्स फ्रॉम एलियन एनिमीज, इसे डाल दो। गैल्वेनाइज करोसिव रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेस 20 कैरी कैपेसिटी, रिपल्सिंग 5% चांस टू डिसआर्म नियरबाई अटैकर्स। कैमिलियन ब्लेंड विद द एनवायरनमेंट व्हाइल स्नीकिंग एंड नॉट मूविंग। ओह, ये भी बुरा नहीं है सही बोलूँ तो। और अब जाते हैं ना 191। कैसोपिया 1 कहाँ पे है? इधर है। एंड ये सारा ओल्ड कैंप साइट मेरे हिसाब से यहाँ पे या तो एक्लिप्टिक होंगे या फिर क्रिम्सन रेडर्स। ये रही ना। I can't believe I'm here. It feels like walking into a dream. Oh, it's been nearly 20 years. It feels like a lifetime. Strangely, this place looks exactly the same as I remember it. But that isn't possible, right? Just like a dream. Thank you. Right now, I feel like I need all the help that I can get. Phew. Okay.
So, let me get my bearings for a moment. Yes, this looks correct. Those rock formations nearby look familiar. My old campsite shouldn't be far. You mean besides the dangerous terrain, vicious fauna, and the chance of getting lost? Nah, we've got nothing to worry about. Knowing that is the only reason that I'm here. Once we get to the campsite, we'll use that as a starting point to search for the crew's shuttle wreckage. Let's go. Okay. ये इस्तेमाल किया है तो अब ये रखा है तो इस्तेमाल करता हूँ अभी। देखे तो फ्लोरा 5 है, फौना 6 है। वो क्या था? ओह, निकल। Scan any promising leads? 2 हो गए। कोई पौना नहीं दिख रहा मुझे। ओ ये रहा ना, सेंटी स्कल गेजर। सारा क्रैश शाइट। ओ यहाँ पे भी एक और। Hey. This must be some debris from my shuttle. Not exactly a textbook landing, but I didn't have much of a choice. Well. Speak to Sarah, हाँ? उससे पहले ये सब क्या है यहाँ पे? Okay, ज़्यादा कुछ लड़ाई का तो नहीं लग रहा यहाँ पे। Well, this is it. This is the spot where I spent close to a year waiting for rescue. Not exactly Paradiso, is it? I'm surprised you've never heard of the place. It's a resort colony in the Parima system. You know, a place to get away and unwind. Maybe we should head out there after we're done. Goodness knows we'll both need a vacation. I never said I walked away. When my ship hard landed on the surface, it broke apart. There was no fire, but I was pretty badly injured. Had to crawl from the wreckage. When they finally rescued me, the UC medics said I had 3 broken ribs, shattered my ulna, and had internal organ damage. I was in the medical ward recovering for almost 6 weeks. मतलब almost 1 साल वो उतने सारे इंजरीज के साथ थी। I wish. I was so uncomfortable. I would have settled for a pile of straw. Look at this thing. It's been sitting here rusting. I think we need to grab an emergency power cell to get the ship's computer up and running. No, I'm afraid that it can't. It's only designed to power individual systems. Even if it could, my old shuttle is far too damaged to be fully restored. Sure, we have plenty of power cells on the ship, but they're not UC military grade. They won't work. I'm afraid we'll have to do some scrounging. Sure, if we're lucky. When I was stranded, I set up a distress beacon powered by emergency power cells. The beacon was up there on the plateau. I guess it's time to start climbing. Well, fuck. Okay. तो चलो चलते हैं।
ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है। ना 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 ना। कोई आइडिया नहीं किसका है ये, मैं बस ऐसे ही धुन बजा रहा हूँ अपनी खुद की। क्या? Oh shit. Setting up this beacon probably saved my life. Who knows how long I would have been stranded here. टेरिटोरियल, अगर जैसे ही कुछ करेंगे ये सारे के सारे हम पे हमला करने लग वाले हैं। टेरिटोरियल दिखा भी है, देखा? Oh shit. कोई एक क्रायो माइन है, ठीक है। शिट 8 नहीं, डैमेज रेजिस्टेंस चाहिए मुझे। ओडेशिया बोबॉन नहीं, हाँ ये एक है, तो ले लो। ये हुआ। और एक और चीज एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ, कंट्रोल्स। एक्चुअल कंट्रोल्स का है, बाइंडिंग्स मीले वी है ना, गन मैश भी मेरे हिसाब से फिर वी ही होगा। यप शिट, काश मेरे पास थोड़ा और क्रायो माइंस होते यार। एड ई का है, ई का है। कहाँ मेरे पास इतने जाते थे यार। Shit. नहीं 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 नहीं। जा जा जा। जाओ। ओ रिलोड करो, रिलोड करो। ओह शिट शिट शिट।
मार दिया और अब ये फाइनली ये बंदा क्वार्क डिजेनरेट टिफ्यूज सीधे नीचे कूदते हैं। ये रिलोड करो। इसको भी फुल्ली रिलोड कर देते हैं। ओह शिट, अबे यार इससे क्या हुआ? क्यों नहीं काम कर रही है? मेरे पूरा फुल है। ठीक है, कुछ और लगाता हूँ। ग्रेविटी डैश नहीं, पर्सनल एटमॉस्फेयर भी नहीं, पैरेलल सेल। ओह डेफिनेटली। ओके Dead. Oh, नहीं। 8 amps, yes. Plus 20 band. Shit. काफी चीजें चाहिए मुझे। एकदम नीचे जाके भी एक है। Plus 25 damage, yes. ये not exactly what I wanted, to be honest. ये चलता है। Oh shit! मारो। Shit! हील करो अपने आप को। ना काफी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा मुझे सही में अभी। ऐसे जगह में रही है। देखते बात करके कुछ बोलेगी क्या? I hope we find something at the other crash site. The anticipation is almost too much to bear. If you think it will help, then feel free. After my rescue, the brass evaluated my mission debriefing and determined the crew was dead. When I pressed them on it, they told me it was wartime and Command didn't have unlimited vessels and personnel available to scour the planet. Okay. Okay, back to it then. No, it's fine. Go ahead. We still have work to do. Let's keep on it. सारे क्वेश्चंस पूछ लिया। Orange, ठीक है। It has been 2 days since my crash landing in Cassiopeia 1. I've been slipping in and out of consciousness.
but I've been able to use emergency meds to keep my pain levels to a minimum. Medical self-assessment has revealed 3 cracked ribs, a broken forearm, a minor concussion, probable internal damage, and a hell of a lot of bruises. I'll do the best that I can to push through, but I can't allow my injuries to keep me from reaching Shuttle 02. Okay. Using the telemetry data and geomapping charts I had in my slate, I was able to track exactly where Shuttle 2 went down. Unfortunately, it appears to be located several thousand kilometers away, making it impossible to reach on foot. Even if the planet was hospitable and the terrain accommodating, I'm in no physical condition to even attempt such a journey. Additionally, with my distress beacon and all my supplies located at this crash site, I don't dare leave it behind. I'm afraid my crew will have to deal with whatever hardships they've encountered on their own. All I can do at this point is pray they're safe. It's been nearly a month and I'm down to my final 3 power cells. If I want to make them last, I'm going to have to disconnect them from my ship's computer system, which means I lose access to my computer and my short-range transmitter. If Shuttle 2 makes any attempt to reach out to me, all they're going to receive is signal. It's a horrible decision to make, but if Shuttle 2 hasn't contacted me by now, it's unlikely that they ever will. I don't know if that means their comm system is simply damaged or if they've left their crash site, or if they're even alive. My only hope is continuing to power the distress beacon in hopes of being picked up and then searching for them from the air. Oh, Dauntless. Cassiopeia 1, termination point, telemetry lost, ship destroyed. Cassiopeia 1 surface. ठीक है. We've located where the other shuttle went down. I can't believe our plan worked. Don't even joke. If this data is faulty, and we end up being pointed to a pile of rocks, I don't even know what we'd do next. I'm fairly certain I was able to capture all the data before I hit the ground. I'll try not to worry about it if you won't. Definitely, you brought the right person with you. And so modest, too. The telemetry data puts the wreckage out of range to hike. We're going to have to head back to the ship and land on a different part of the planet. Let's get going. वो करने की जरूरत नहीं है वापस अपने शिप में जाने की मैं डायरेक्टली फास्ट ट्रैवल करने वाला हूँ यहाँ से यहाँ पे और कुछ नहीं है लगता है और कुछ नहीं है ना यहाँ पे तो फिर डायरेक्टली चलते हैं हम ये एक फायदा है एनकम्बर्ड नहीं होने का From what I'm seeing, this world has all the essential building blocks to support life. अचानक से बहुत अंधेरा हो गया ये यहाँ पे चलते जाओ Oh, look at this view. Had I been on this planet under more pleasant circumstances, I might have had more time to appreciate the beauty it has to offer. माफ करना हंटिंग ब्रेन स्प्राउट पर तो मरने वाला है मेरे हिसाब से ऐसे ही चलते रहो आगे और हम उसकी तरफ पहुंचेंगे इस उम्मीद तो वही है स्पेस रोच ग्रेजर गेजर या ग्रेजर ग्रेजर स्कैन करो बस एक और रिसोर्स चाहिए मुझे सही जा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं ओह होली फक वो क्या था इतना आवाज
टेरिटोरियल है ये। Oh shit. Keep scanning. I'm sure there's something nearby. Okay. 50% हो गया। क्या? कोई एक रेड वाला यहाँ पे आया था। इसको क्यों नहीं दिखा रहा था पता नहीं। ओ नहीं। Fiber, no. Judging from this debris, the crew's shuttle sustained far more damage than my own. Oh, those poor souls. Okay. इस तरफ जाना है मुझे। और ये रहा क्रैश साइट। किसी ना किसी से तो लड़ाई होगी डेफिनेटली। This is what's left of the cruise shuttle, but it looks like parts were scavenged and dragged somewhere else. Could there have been survivors? ये लाल क्यों हो रहा है इधर जाने पे? बाहर निकलो और इतना अच्छा पैलेट है, इसके अंदर जाने पे इतना बकवास पैलेट। कलर पैलेट की बात कर रहा हूँ मैं। चलते जाओ। And the fire is still fresh. Is there someone here that's still alive? मान में क्या? अपने गन को होल्स्टर कर देता हूँ। बेकार में उसे क्यों मारूं? 10 सालों से अब जिंदा रहा है ये। और देखते कौन जिंदा है अभी। Stop. I'll shoot if I have to. Just turn around and leave. I know how to use this thing, and I will. Oh my god. Who are you? I'm nobody. Just go away. I'm not going to let anyone take my stuff again. No way. Both of you, just go! Hey, I'm not stupid. Last time people were here, they promised to help. They ended up tricking me. They stole all of my good stuff and left me behind. I'm not going to let that happen ever again. Answers? About what? How do I know you're telling the truth? Stop it right now. Put away that gun and talk to us. We want to know what happened here. See? You're not nice at all. I knew it. You're a liar. That's all grown-ups do is lie. I'm so sorry. I don't know what came over me. I was wrong to get so angry. We are here to help you, and we promise to tell the truth. I don't know.
You're kind of scaring me. Why should I listen to you? That's because no one is fooling me ever again. We can take you home? The crew? No one's been looking for that crew since before I was born. So tell me another lie. Go ahead. You were born here? Hold on. Oh my god. Your parents, your mum and your dad, what were their names? Jenna and Elias. Why? Jenna and Elias. Private Jenna Marsh and Corporal Elias Obrist. You're their daughter. Listen to me. I knew your parents. They worked with me on the Dauntless. I'm Commander Sarah Morgan. You're Sarah Morgan? Mom and Dad's captain? My parents used to talk about you all the time. It's like a dream to finally meet you. I know this is Cassiopeia. I've been here since I was born. I know my mother and father were from Gemsun or something like that. I bet it's like 1,000 miles away. A bit more than that. Jemison. My parents told me she was in command of their ship in a huge battle. They said she was a hero and the bravest person they ever knew. Yeah? Well, you're too late. My parents are dead. My father died a long time ago. And my mother, she was killed by those monsters at the graveyard. It's just me here now. All by myself. Let me ask you a question. Actually, I don't even know your name. Oh, yeah. My name's Sona. Sona. What a lovely name. Sona, you mentioned a graveyard. Is that where the crew is, you know? Buried? Yeah. It's a bunch of stones with those necklaces like the ones my mom and dad had hanging on them. Thank you, Sona. I'm going to talk to my friend here a minute, okay? Okay, Sarah. एक मिनट, ये सब छोड़ो, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन इसके पीछे आया था। इसे क्या बोलते हैं? इसे ट्रिक करके इसके सारी चीजें लेके गया हूँ, उसके पीछे जाना चाहूंगा मैं। छोटी बच्ची है यार वो बच्ची को ट्रिक करके उसके सारी चीजें लेके चले गए। वो एक्लिप्टिक क्यों होंगे? एक्लिप्टिक या क्रिम्सन रेडर्स? Phew. I don't even know where to begin. I'm trying to hold it together. There's just too much coming at me all at once, you know? I'm just so relieved that you're here. There's absolutely no way I could have handled this alone. Whew. Yeah. That's probably good advice. Oh, there's so much to process. But I don't have time to deal with it right now. If you want to help, then find that graveyard and bring me those necklaces Sona mentioned. I'm hoping they're my crew's gene tags. It's an identification tag worn by UC military personnel. It's encoded with the soldiers' medical information and a sample of their DNA. If we can bring them back to Jemison, it would be like bringing home the crew's bodies for a proper burial. Oh, I'll be fine. It's you I'm worried about. Sona's monsters are undoubtedly hostile life forms that have claimed the graveyard as their territory. Okay.
जाके लड़ना शुरू करते हैं। हाँ, इस बार अकेले लड़ना होगा हमें। कोई भी नहीं होगा हमारे साथ लड़ने के लिए। दो मिनट देना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलो वापस आ गया जी। फिर से उनके खिलाफ ही लड़ना होगा मुझे लग रहा है, वो चट्टान वाले जो जानवर थे। सही रास्ता ही जा रहा हूं ना मैं? ओह ओह मुझे लगा ये फौना है, फ्लोरा, सॉरी फ्लोरा है, ये फौना निकली। भागने मत है या रिलोड करो। Coral bug scavengers. ये भी रिलोड करो। मुझ पे अगर ये हमला नहीं करेंगे तो मैंने भी नहीं करूंगा, सही बोलूं तो। सर हमला करोगे कि नहीं? आओ, हमला कर रहे हैं।
का स्कैन का ये रहा ना, और एक और था ज्यादा बड़ा वाला। ना भागने ही नहीं दिया बंदे को। इससे पहले वाले भाग गया था, इस बार भागने नहीं दिया। वो क्या था? इधर से चलो। मेरे हिसाब से वो कोरल या जो भी है वो थे मॉन्स्टर्स जिसकी बात कर रही थी बंदी। ये लेना है। 3 4 5 किसी ने ये तोड़ दिया। 7 8 9 और ये आखिरी वाला किसी ने तोड़ दिया यार। वो है इसको चेंज करो। ग्रैब डैश नहीं, सोलर फ्लेयर। ओह यस, और अभी 8 सारे लो, एम्प भी ले लो। बैटल सिम डेफिनेटली। ये किसी होता है मीले डैमेज, ये भी ले लो। एक्शन से यूज, ठीक है। इमरजेंसी किट की अभी जरूरत नहीं है। ये सारे O2 ठीक है, ले लो यार अभी। अभी के लिए डैमेज रेसिस्ट फुल ऑन बढ़ाना है। ये आसानी से हो गया। ओ वो रहा दूसरा एक और, कहाँ है? अलविदा। ओह मिस हुआ थोड़ा। और ये बड़ा वाला क्या है? ग्रेटर सिल्वर फिश ना, नॉर्मल सिल्वर फिश नहीं अनफॉर्चुनेटली। 3 4 ठीक है। लगता है इस प्लेनेट के टॉप प्रेडेटर वो सिल्वर फिश है।
कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? ये यहाँ से शायद शॉर्टकट हो ना, ये सीधा बस रास्ता है। शॉर्टकट क्या? Okay. No! No, 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 no! How many times do I have to say it? I said I don't want to go! Leave me alone! Sona, calm down and listen to me. It's much too dangerous to stay here all by yourself, darling. I don't care. This is my home. You can't make me leave. We can't leave her here. It's not safe. She has to come back with us to Jemison. Oh, I don't know what to do. Can you talk to her? I know. I'm not proposing we knock her out for God's sake. Look, maybe you can talk some sense into her. Help her make a decision. I'm sorry, I can't do this right now. I can hear you talking about me. And I don't care what either of you say. I'm not going anywhere. Look, I'm clearly out of my element here and not in the right state of mind. Could you just talk to her, please? Okay. कन्विंस करना है अगर इसे, तो सबसे पहले एड और इतने ज़्यादा ये जो रखे हुए हैं उसका इस्तेमाल करो। एक और कोई ये नहीं, हाँ ये दो। Why won't Sarah listen to me? I mean, kinda. I just met her. The only reason I'm trusting you at all is because my mom and dad said Sarah was a good person. I know she probably wants to help me out, but I really wish she'd listen to my part of the story. I've been alone for a long time, and even when bad people visit, I've been safe. That still doesn't mean I should leave the only home I ever had, does it? Mom and Dad told me there was a whole universe out there, with thousands of planets. They showed me the maps and the star charts. That does sound pretty cool, but, well, it's also kind of scary. It would be hard to leave the only home I've ever known. ये इसे तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, पहली बात तो बिल्कुल भी नहीं। ये अभी तक भले ही क्या बोलते हैं सेफ रही है, पर अगर कोई एक पागल बंदा आ गया जो सब कुछ चाहता है यहाँ पे और उसे सीधे मार दे, कोई एक्लिप्टिक या क्रिम्सन रेडर्स से, तो फिर ये मर जाएगी ना। Mom told me there were really bad people out there. Worse than the ones I've already seen. But leaving Mom and Dad behind, it's really hard. Even though they're dead, I don't want to abandon them. I am safe. Those monsters can't catch me. They've tried, but I learned how to trick them. They're pretty dumb. And if bad people visit here, I know how to hide. I was even watching you when you landed. I bet you didn't even see me. This planet doesn't bother me. That's why I'm not sure I need to abandon my mom and dad. I suppose you're right. Mom and Dad
always promised that I'd leave here someday. I'm sorry I yelled at everybody. I know you and Sarah are just trying to help. I'm going to go get my stuff and then I'll board your ship. Don't worry, I'll stay out of the way until we get, well, wherever we're going. देख ऐसे चोरी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ये चोरी कर ली मैंने। ऐसे ही आके कोई भी बंदे तेरे सारी चीज़ें चोरी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से ले जा रहे हैं तुझे। ऑल फॉल डैमेज बाय 5%, नाइस। तनी और कितने छूट गए होंगे मुझसे। That poor girl. I hope we've made the right decision. Oh, I do hope that's true. We're ripping Sona from the only home she's ever known and casting her back into society. It's going to be difficult for her to adjust to the changes. Wherever she ends up, just promise me we'll check on her from time to time, please. Thank you. Look, before we leave Cassiopeia behind, I wanted to say one more thing to you. Perhaps at the overlook we passed on the way here? I promise it won't take long. Let's go. Okay, proceed to the overlook, huh? Oh, उधर ऊपर जाना है। Okay, okay. जल्दी आ जा। Look, before we head back to the ship, I wanted to tell you how much of an amazing gift this has been. You had to push me to come out here, and if I hadn't have listened to you, the universe would probably have never known about that little girl. Oh, yes, absolutely. And it's all thanks to you. You know, this is the second time I've been on this world. And until this very moment, I never stopped to reflect at just how magnificent it was. Oh, look at this place. This is the reason I'm out here, exploring the stars. Worlds upon worlds, just waiting to have their beauty discovered. Shedding this burden of my past has finally allowed me to open my eyes, wider than they've ever been opened before. And it's all because of you. Oh, yaar. Perhaps. I suppose we'll both have to think about that for a while now, won't we? Well, I suppose it's time to bid goodbye to Cassiopeia once again. This time, under much happier circumstances. Now, let's head back to Jemison. I want to give those gene tags you gathered to Admiral Logan and figure out what we're going to do with Sona. Return to New Atlantis. सीधे फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ मैं। ये बिल्कुल नहीं करूँगा। मास्क में जाता हूँ पहली बात तो। अगर एडमिरल लोगन से बात करनी है तो वो यहाँ से ही होगा। Let's pop into Outland while we're here and see if Joe has anything useful to add to our arsenal. Yep, जानता था एडमिरल लोगन से बात करना होगा पहले और उसके बाद लॉज में जाना होगा शायद।
चलो सेंट्रल कमांड जाना है। ये दिखा रहा नहीं था, पता नहीं क्यों गेम इधर जाने का इस फ्लोर में। Enjoy the penthouse. One of the finest views in New Atlantis. Welcome back. Did you find your answers? Not only that, but we found someone there, alive. A child born from 2 of the crew that survived the crash. After her parents died, that poor girl spent years surviving on that hostile world, alone. We abandoned her, Admiral. We let her down. I'm sorry. I had no idea. How could we have possibly known? Sona. Is that her name? She must be a remarkable young woman. She's extraordinary, Admiral. And I'm afraid the United Colonies let her down. You're absolutely right, Sarah. We did let her down. One thing that I can assure you is that the names of these men and women will never be forgotten. I'll see to it personally. Thank you, Admiral. Good luck to both of you. It's been an honor. Once we're done here, we should have a little talk with Sona. Poor thing's waiting for us at the lodge. और ये लॉज। हाँ, मैं भी लॉज में जाना ही चाहता था क्योंकि इतनी सारी चीजें बनाने की सोच रहा हूँ मैं। I wonder if any discovery report. Nah. Let's get a second opinion, shall we? Walter and I were just discussing the expenses incurred during the attack. No, I was explaining that there's nothing to discuss. It's been taken care of. It seems that Walter has taken it upon himself to cover the costs of the repairs to both the lodge and the Eye, as well as any expenses relating